Hi friends, so I'm back again with our new topic, and I think most of us find this topic to be very confusing, and after reading the entire thing again we get confused, again we think अरे कुछ रह गया है, कुछ भूल रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके में बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, हम लोग पूरा इस वीडियो में पढ़ेंगे। और एज यू ऑल नो, माय नेम इज शिवानी मेहरोत्रा एंड आई टीच इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, लॉ एंड कॉमर्स सब्जेक्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 11th 12th, बीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, आईएएस, यूजीसी नेट, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। So what is gross domestic product? Short form क्या है बच्चों? GDP. So gross domestic product is the total market value of all the finished goods and services produced within a country's borders in a specific time period. It excludes the value of intermediary goods or second hand sale and purchase of goods. जो चीज हमारी इकोनॉमी में बनेगी, the thing that we are producing, that we are manufacturing, the commodities that we are producing in a period of 1 year will be calculated. But कोई चीज हमने ऑलरेडी बना दी है, उसको एक बार बेच दिया ए को, फॉर एग्जाम्पल ए ने उसको बी को बेचा और बी ने उसको सी को बेचा, तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट तो एक ही था जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे बेच दिया, तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। सिर्फ एक बार सेल काउंट होगी जो कि फर्स्ट हैंड गुड्स ले रहे हैं, जो उसी साल में मैन्युफैक्चर्ड है। उसके अलावा इंटरमीडियरी गुड्स हो गए या सेकेंड हैंड सेल एंड परचेज हो गई, उसको ऐड नहीं करेंगे। जब हम सारी इनकम ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें मेजर पॉइंट्स क्या है? The gross domestic product is the money value of all finished goods and services made within a country during a specific period. Meaning, first of all, the goods should be finished. मतलब ऐसा नहीं है कि गेहूं लाए और आटा पीस दिया। अगर मैं सैंडविच बेच रही हूं तो मेरे को गेहूं, आटा सबकी अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। I will just calculate that 25 rupees का there is one sandwich. ओके, तो वो होगा क्योंकि सैंडविच जो है फाइनल कंज्यूमर ले रहा है, बट उस सैंडविच को बनाने में जो ब्रेड है उसकी कॉस्ट अलग से ऐड करें क्या? जो उसके अंदर मैदा लगा है उसकी कॉस्ट अलग से ऐड करें क्या? ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड करते हैं। ओके, then gross domestic product is used to estimate the size of an economy and the growth rate. जितना ज्यादा जीडीपी होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी इकोनॉमी की। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 ways using expenditures, productions और incomes। 3 तरीके से we can calculate a GDP of any economy. How? सारे खर्चे गिन लो, एक्सपेंडिचर, जहां जहां हम खर्चा कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, दैट मीन्स वी आर परचेजिंग समथिंग। पॉइंट नंबर 2, सारी प्रोडक्शन काउंट कर लो, जहां जहां प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, उन सबको ऐड कर लिया। या एक और तरीका है, सब लोगों की इनकम कैलकुलेट कर लो। तो जब हमने इनकम कैलकुलेट करी, दैट मीन्स हमने उसको पैसा दिया या उसने हमको कोई सर्विस दी, तो अगेन क्या होगा? सब चीजों से जीडीपी ऑलमोस्ट सेम आएगा। Then it can be adjusted for inflation and population to provide deeper insights. अगर मेरे को बहुत ज्यादा स्टडी करना है इकोनॉमी का और डेप्थ में समझना है कि what is improving, what is not improving, how is employment increasing or not increasing, how is poverty reducing or not, तो कैसे होगा? It can be adjusted for inflation also and for population also, क्योंकि GDP per capita भी calculate हो सकता है। Okay, then GDP is a tool to guide policy makers, investors and businesses in strategic decision making. जब strategy levels पे आप बैठते हैं, आप बड़े बड़े फैसले लेते हैं, in that case you have to keep in mind what is the GDP, how is the GDP being affected by whatever we are doing. Okay, what are the types of GDP? Okay, so nominal GDP is the measurement of the raw data. Raw data जो हमको मिला उसके हिसाब से we will calculate GDP, that is known as nominal GDP. What is real GDP? It takes into account the impact of inflation
and allows comparisons of economic output from one year to the next year and other comparisons over periods of time. Real GDP क्या हो गया? When we are comparing between two separate years, when we are counting inflation, when we are making comparisons, so this will give what? Real GDP. Then GDP growth rate is the increase in GDP from quarter to quarter. फर्स्ट क्वार्टर का निकाल लिया जीडीपी, थर्ड क्वार्टर का निकाल लिया जीडीपी, तो हम क्या होगा? कैलकुलेट कर पाएंगे ग्रोथ रेट फर्स्ट क्वार्टर में कम था या इस क्वार्टर में ज्यादा है, या पहले क्वार्टर में ज्यादा था थर्ड क्वार्टर में कम है. तो कंपैरिजन करने के लिए भी जीडीपी इज यूजफुल. ओके, नेक्स्ट, जीडीपी पर कैपिटा measures GDP per person in the national population. It is a useful way to compare GDP data between various countries. अगर population के हिसाब से we are measuring GDP तो वो क्या हो जाएगा? GDP per capita. तो उससे क्या होगा? We can measure Indian GDP, we can measure foreign GDPs also. भैया वो वाली कंट्री का ऐसा है, दूसरी कंट्री का ऐसा, यूके का ऐसा है, यूएसए का ऐसा है, इंडिया का ऐसा है, सबका अलग अलग. ओके, देन क्या? जीडीपी का फॉर्मूला was it gross domestic product? It is C plus G plus I plus NX. What is C? Consumption. G is government spending. I is investment. NX is net exports. मतलब जब एक्सपोर्ट नेट होगा वो कब होगा? ग्रॉस एक्सपोर्ट्स. मैंने अब फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करा, इम्पोर्ट कितना करा? मैंने 80 रुपीज का प्रोडक्ट इम्पोर्ट करा, बचा कितना? 100 माइनस 80 इज 20, तो नेट एक्सपोर्ट्स कितना होगा? 20. ओके, इट इज बेटर टू हैव मोर ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड लेस ऑफ इम्पोर्ट्स, तभी हमारी कंट्री में पैसा आएगा, अदरवाइज वी विल बी लूजिंग आउट ऑन मनी. Okay, I think the formula is clear and please remember this formula. GDP is equal to C plus G plus I plus NX. This formula is very important. बहुत सारे एग्जाम्स में बच्चों आ जाता है ये. आपका IS हो, PCS हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, आप कोई भी एग्जाम लो उसमें GDP पे जरूर एक क्वेश्चन आता है. तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अच्छे से पढ़ लो. कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि C इज कंजम्पशन. व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? द C इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंज्यूमर स्पेंडिंग. कंज्यूमर्स स्पेंड मनी to buy consumption goods and services such as grocery and furniture. कुछ भी हम खरीद रहे हैं और हम उसे खुद कंज्यूम कर रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं, that is what consumption expenditure. Consumer confidence therefore has a very significant bearing on economic growth. A high confidence level indicates that consumers are willing to spend, while a low confidence level reflects uncertainty about the future and an unwillingness to spend. Economic growth किस तरीके की होगी ये कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है. हाउ? इफ आई हैव वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आई विल स्पेंड मोर मनी. इफ आई एम रिलक्टेंट, ओ माय गॉड कल क्या होगा, मेरे पास पैसा ही नहीं होगा, हम तो खा ही नहीं पाएंगे, हम तो खरीद ही नहीं पाएंगे, इन दैट केस व्हाट विल आई डू? आई विल सेव सेव सेव. सो माय इकोनॉमिक ग्रोथ विल डिपेंड अपॉन द कंजम्पशन दैट आई एम डूइंग राइट नाउ. ओके, नेक्स्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. The G represents government consumption expenditure and the gross investment. Government spend money on equipment, infrastructure and payroll. Infrastructure क्या है? Roads, bridges, dams, railway, सब government spend कर रही है इन सब पे. तो क्या government जो spend करती है वो in all हम लोगों को ही तो मिलता है. हम लोग कौन है? Citizens of a country. तो government will spend money on the citizens of a country by way of roads, by way of various other infrastructure, by way of equipment. Okay, then government spending assumes particular importance as a component of GDP when consumer spending and business investment both decline, as for instance after a recession. गवर्नमेंट स्पेंडिंग उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब या तो कंज्यूमर कम स्पेंड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में है वो कम हो रहा है.
जैसे बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब जैसे कोविड है, कोविड में क्या हो रहा है, कोरोना वायरस 19 जो आपने सुना है अभी, तो उसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है हम यहाँ पे भी लोन्स दे देंगे, हम बहुत सारे बेल आउट पैकेजेस दे देंगे, हम एक्स्ट्रा पैसा रिलीज कर देंगे। व्हाई? बिकॉज नाउ इंडिविजुअल्स आर लूजिंग देयर इनकम। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी नहीं आ रही, बहुत लोग हैं जो सेव करके खर्चा कर रहे हैं, बिकॉज यू नेवर नो आगे क्या होता है। So because of such a situation, the gross investment is done by the government. Okay. Next comes investment. The I is for private domestic investment or capital expenditures. Okay. Business spend money to invest in their business activities like buying machinery. Okay. Business investment is a critical component of GDP since it increases productive capacity and boosts employment. If I have a very big business, I employ many people, and if I am investing more and more money into that business, my business will grow. जब मेरा बिजनेस ग्रो होगा, मैं और लोगों को एम्प्लॉय करूंगी, और ज्यादा सैलरीज दूंगी, और ज्यादा बिजनेस ग्रो होगा। जब मैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगी तो मैं एग्जिस्टिंग लोगों की भी सैलरी इंक्रीज करूंगी, और ज्यादा प्रॉफिट होगा, लोगों को भी प्रॉफिट होगा जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, माय एम्प्लॉइज, एंड आई विल आल्सो गेन एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ बिजनेसमैन। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, बोथ द वेज इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। ओके, now what are net exports? Net exports is calculated as total exports minus total imports. तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, nx is equal to exports minus imports. The basic thing is that the export should be more and imports should be less. Exports ज्यादा होंगे, we will get more money in the economy. Imports ज्यादा होंगे तो we will lose more money from the economy. So it is better if we earn. That is why it is called exports should be greater. Goods and services that an economy makes that are exported to other countries less the imports that are brought in is called as net exports. A current account surplus boosts a nation's GDP while a chronic deficit is a drag on the GDP. करंट अकाउंट में सरप्लस होगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा, अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा तो जीडीपी गिर जाएगा. All expenditures by companies located in the country, even if they are foreign companies, are included in the calculation. Okay? कोई भी बाहर की कंपनी है जो हमारी कंट्री में लोकेटेड है, चाहे वो फॉरेन कंपनी क्यों ना हो, उसका भी कैलकुलेशन हमारे में ही कैलकुलेट करा जाएगा. ओके, देन रियल जीडीपी. Real GDP is calculated by using a GDP price deflator. Now, which is the difference in prices between the current year and the base year? For example, if the prices rise by 5% since the base year, the deflator would be 1.05. Okay. Nominal GDP is divided by this deflator, which gives the real GDP. Okay. Now, real GDP accounts for the change in market value, which narrows the difference between output figures from one year to year. A large discrepancy. Real GDP accounts for the change in market value, which narrows the difference between output figures from year to year. A large discrepancy between a nation's real and nominal GDP signifies significant inflation if the nominal GDP is higher, or deflation if the real is higher in the economy. तो दोनों ही केस में जब रियल जीडीपी होता है तब क्या होता है, जब नॉमिनल जीडीपी हाई होता है तब क्या होता है. दोनों ही केस में समझ में आ गया. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी. सिर्फ नॉमिनल के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी ले लेते हैं. ओके, नॉमिनल जीडीपी इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग डिफरेंट क्वार्टर्स ऑफ आउटपुट विद इन द सेम ईयर. एक ही ईयर की जब बात होती है, ठीक है. नाउ नॉमिनल जीडीपी इज यूजुअली higher than real GDP because inflation is typically a positive number. कभी आप बोलते हैं ना नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया. नेगेटिव नहीं, इन्फ्लेशन हमेशा ज्यादा ही होती है क्योंकि वो पॉजिटिव होती है.
Okay, when comparing the GDP of two or more years, real GDP is used because by removing the effects of inflation, the comparison of different years focus only on the वॉल्यूम या solely on the volume. सिर्फ वॉल्यूम पे जब डिपेंड करता है तो हम इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन हटा देते हैं, तब क्या आ जाता है हमारा नॉमिनल जीडीपी. ओके, देन कम्स criticisms of GDP. What does this mean? इतने सारे एडवांटेजेस हम लोग ने पढ़ लिए, जीडीपी से ये फायदा है, जीडीपी से वो फायदा है, बट नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ जीडीपी. फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट डज नॉट अकाउंट फॉर सेवरल अनऑफिशियल इनकम सोर्सेज. बहुत लोग इनकम कैलकुलेट ही नहीं हो पाती, जैसे ट्यूशन टीचर की इनकम, ब्लैक मार्केट की इनकम, ये सब कैलकुलेट ही नहीं हो पाती, तो वो आ ही नहीं पाती हैं. जैसे कि GDP relies on official data, so it does not take into account the extent of informal economic activity. GDP fails to quantify the value of black market activity, volunteer work, and household production, which can be significant in some nations. Okay, अब जैसे household में मैंने carpet बना दिया, या आए मेरे पास जो मेड आती है वो काम करके गई, तो हु इज कैलकुलेटिंग दैट कि मेड को कितना पैसा दिया गया. मैंने अपने बच्चों को खुद पढ़ा दिया, हु विल कैलकुलेट दैट कि ट्यूशन के लिए पैसा दिया ही नहीं, कोचिंग के लिए पैसा दिया ही नहीं, वो तो मम्मा ने ही पढ़ा दिया बच्चों को. या कुक को पैसा नहीं दिया, आपकी मम्मी ने ही आपके लिए खाना कुक कर दिया. तो इतने सारे वैरायटीज, इतनी सारी चीजें होती हैं दैट आर नॉट कैलकुलेटेड इन द इनकम ऑफ द कंट्री, तो वो क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं. ठीक है, गलत बात है. It is geographically limited in a globally open economy. What does this mean? GDP does not take into account profits earned in a nation by overseas companies that are remitted back to foreign investors. This can overstate a country's एक्चुअल इकोनॉमिक आउटपुट. इनकम कहीं करी, भेज कहीं और दी, काउंट तुमने उस कंट्री में कर ली, इतना सारा कंफ्यूजन. दैट इज व्हाई इट क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड इट इज अ रॉन्ग एस्टिमेट. ओके, it emphasizes material output without considering overall well-being. GDP growth alone cannot measure a nation's development or its citizens' well-being. And for example, a nation may be experiencing rapid GDP growth, but this may impose a significant cost to the society in terms of environmental impact and an increase in income disparity. No matter GDP बढ़ रहा है, but GDP बढ़ने के बावजूद क्या हो रहा है, environment खराब हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज ज्यादा पोल्यूटेंट्स रिलीज कर रही हैं एयर में, वाटर में. देयर इज इनकम डिस्पैरिटी, रिच रिच होते चले जा रहे हैं, पुअर पुअर होते चले जा रहे हैं, मिडिल इनकम का कोई पता ही नहीं है. इतनी सारी प्रॉब्लम्स जस्ट बिकॉज जीडीपी अच्छा है. मैं सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर तो नहीं कर सकते, तो दिस इज वन अगेन अ ड्रॉबैक. ओके, it ignores business to business activity. Now, GDP considers only final goods of production and new capital investment and deliberately nets out intermediate spending and transactions between businesses. By doing so, GDP overstates the importance of consumption relative to production in the economy and is less sensitive as an indicator of economic fluctuations compared to metrics that include बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोडक्शन में ही यूजफुल होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रीसेल होती चली जाती है. तो अगेन इफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सक्लूडेड, द रियल जीडीपी की वैल्यू या तो टोटल जीडीपी की वैल्यू अगेन विल बी फ्लॉड. ओके, नाउ स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया. जो कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो या सब टॉपिक नहीं क्लियर हो, प्लीज राइट इन द कमेंट and you can also share your doubts and also your comments in the comment section of the video. Please do like the video and share your views,
and do not forget to subscribe to the channel and share the video with your friends. बच्चों, मेरे को जितना सिंपल कर सकती थी मैंने उतना सिंपल करके समझाया है. इतने सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स इसमें समझाए हैं, जैसे आपका जीडीपी डिफ्लेटर है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी. आई होप आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो, और ऐसी सीरीज में मैं और वीडियोस डालती रहूंगी. प्लीज सपोर्ट me by subscribing to the channel, and do tell your friends to subscribe it also. Okay.